कमिटी के चेयरपर्सन थे, राइट? या, सो यू नो दैट ही वाज अ chairperson of drafting committee, right, in the Constituent Assembly, right? In the Constituent Assembly, yeah. Apart from what? Yeah. नेशनल मूवमेंट के लिए कई सारे organization. Acha, very good, very good. Dr. Ambedkar led down many organizations. Yeah? So if you look at what are the organizations he led on? Yeah, very good. He led several organizations. कौन-कौन सा organizations है जो उन्होंने led down किया? महार organization था या कुछ और था, नाम था महार सत्याग्रह थी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। He led down few organization. One was बहिष्कृत हितकारिणी सभा। इसके अलावा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था। So he laid down these organizations. Apart from organization, of course, he laid down organization. Now, what was the purpose of this organization? Purpose of the organization was to mobilize the depressed classes for their rights, for equality, and for democracy, true democracy in India. Apart from organization, what he did? He led many conferences. नहीं? He led many conferences. कुछ conference का याद है जिन्हों डॉक्टर अंबेडकर ने लेड डाउन किया था? Any conference you know that? Mahad conference. Have you heard about Mahad conference? क्या था ये? महाद कॉन्फ्रेंस क्या था? कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे उनको अपनी के बारे में राइट्स के लिए, राइट? स्पेशली इट वाज अ महाद कॉन्फ्रेंस, राइट, लेड बाय द अंबेडकर to fight against the upper caste injustice regarding water. If you look at Mahar caste, who was untouchable of that time in 1920s, 30s, were not allowed to procure water from the common pound, the pound of that village, right? And they were compelled to take water from very outside somewhere in, water bodies, which used to, the dedicated or, to the एनिमल्स, जहां से लोग एनिमल पानी पीते थे, वहां से वो लोग पानी लेके आते थे। तो इन्होंने क्या किया? एक महाद कॉन्फ्रेंस मींस यहाँ पर बहुत सारे महारों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को बुलाया, एंड सपोर्टर को भी बुलाया, और ही लेड महाद सत्याग्रह। महाद सत्याग्रह सेम ईयर में। And let me tell you, he had very much confident in law, legal, right? He put the case in a court, and court allowed, this court allowed depressed classes to take water from the common pound, right? So he led that Mahad Satyagraha, Mahad conferences. Any other conference he led? There was another conference called All India Depressed Class Conference.
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंसेस. कॉन्फ्रेंस मतलब होता है लोगों को बुलाओ, यू मोबिलाइज द पीपल एंड देन डिस्कस अबाउट द इश्यूज. दैट इज कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं होता है. मीटिंग, eating and debating on several issues, right? So that the further action can be taken. Now, apart from the conference, what he did, he used to write a lot in newspaper and magazine, right? And he himself was an editor of several newspaper, right? So he published newspaper and magazine, right? Newspaper and magazine. पता है कौन सा न्यूज़पेपर और मैगजीन उन्होंने लॉन्च किया? कुछ आइडिया हो? मूक नायक. मूक नायक. मूक मतलब होता है जो इंसान बोल नहीं सकता, उसको बोलते हैं मूक. नायक मतलब द हीरो, राइट? देन देयर वाज वन वीकली कॉल्ड जानता. One was called Janata, right? And the next word, newspaper word, Bahishkrit Bharat. Bahishkrit Bharat. और एक और था जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत. प्रबुद्ध भारत. No. See, he had lots of trust on modern press, right? And he had idea that if we, disseminate, if we spread what is happening with the Dalit, the depressed classes. Now, the Prabuddha means the intelligent people, the person who have wisdom will come and support the cause of the depressed classes because they are, not treated equally. Depressed classes used to, get atrocities. Apart from this, what he did, he did certain movements. He did certain movements, right? He did certain movements for social change. What movements he did? Any idea? For example, Mahad Satyagraha, Kalaram temple entry movement, right? Then he also led certain political party. उसके बाद इन्होंने क्या किया? Political party बनाया. कौन-कौन सी political party उनके नाम की थी? The first political party he formed, that was, Independent Labour Party. Independent Labour Party, which fought a 1937 election, right? And then another party he set up, launched, that was Scheduled Caste Federation. Right? And the last, political party he set up, that was Republic Party of India. चला नहीं, फेल कर गए ना, इसीलिए दूसरी बना दी, लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों को ये करे. ठीक है? He was trying. He was a man who was actually trying different experiment. Like Gandhi was doing experiment, Ambedkar was doing also experiment, right? So that was the different part. तो ये सब उन्होंने किया था. अच्छा, उसके बाद क्या जानते हैं?
या यू नो दैट, वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्या जानते हैं अंबेडकर के बारे में? और अम्बेडकर जो थे वो पिछड़ी जाति से ऐसे पहले व्यक्ति थे, इन्होंने लॉ पढ़ी। law पढ़ी। He was a first, educated person from the depressed classes, and he was not only leader, he was a, philosopher. He was a lawyer by practice. He was a thinker. He was a freedom fighter, right? So that was Ambedkar's, he was a great economist. आपको पता है आरबीआई जो बनी है आज की आरबीआई, वो इनके आइडिया पे बनी है। सर मेरे जैसे जो अम्बेडकर जी थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे, तो सर फिर वो फ्रीडम फाइटर कैसे कहना, फ्रीडम फाइटर तो उन्होंने जो ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े, उनके लिए फ्रीडम का मतलब अलग था, हमारे लिए फ्रीडम का मतलब अलग था। उनके लिए सोशल फ्रीडम was more prior than political freedom. Getting political freedom will not ensure a social freedom. Consider British would have been gone in 1857 itself. Consider 1857 में revolt हुआ, and consider Britain would have been gone there, right? What would have been the condition of depressed classes? Exactly unthinkable, right? The caste atrocity already perpetuates, of course, but think, when British would have left India in 1857 alone, right? Now the depressed classes had to fight a lot for social freedom, right? Because without social freedom, political freedom has no meaning. Without social freedom, political freedom has no meaning itself. And that's why, if you look at Dr. Ambedkar was in support of equality, liberty, and fraternity. Right? For him, that was a cardinal principle of the society. What was that? Liberty, equality, and fraternity. He said all three are essential part of any egalitarian society, right? Egalitarian, saman samaj, samanata ki samaj, right? Egalitarian society means samanata, saman samaj, जहां पर समानता की, समता की बात हो, समता मूलक समाज हिंदी में बोलेंगे तो, right? Right, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या जानते हैं अंबेडकर के बारे में? इन्होंने बहुत लिखा। He was a frequent writer. He used to write a lot, right? He used to write a lot. He wrote on several issues. He wrote on caste system. He wrote on democracy. He wrote on nationalism. He wrote on women. He wrote on, partition, right? India's partition. He wrote on labor. He wrote on trade union. He wrote on Buddhism. He wrote on Marxism, right? Marxism. He wrote on capitalism, right? He wrote on political representation, right? His writing is immense and diverse. इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो एक दूसरे से अलग थी कि सेम? See, there's a very changes in Ambedkar's life. जैसे लाइफ में लाइफ बढ़ता जाता है, पर्सपेक्टिव बदलती जाती है, राइट? वेरी गुड, एग्जैक्टली, आप यू राइट, आप सही बता रहे, यू आर राइट कि इफ यू लुक एट द communist also talks about the downtrodden people, the poor people, right? Ambedkar also discussed and talked about the downtrodden people and for their rights. For their rights, right? So if you see Ambedkar was
a communist in 1930s, 1940s, because he was so much influenced by the USSR improvement, USSR industrialization, right? By 1940s, he saw that, if we bring communism in India, that would not be the solution, because he saw in several industries like railway was one of the prominent industries of those time, who used to give lots of employment, right? Or he saw workers in Mumbai. He was minister of law and labor in the Viceroy Executive Council also, right? He was a special representative. He saw, even if we talk about equality, right? If we see that when two persons are getting equal salary, but they are not still equal, right? They are not sharing food or sitting apart while eating. Now he thought, communism is not be the solution itself. Secondly, if you look at by 40s or 45, West was growing. West matlab America and Britain was growing, right? The problem of the working class get solved in that state also, right? Because of the, if you look at the wages increased, if you look at their time working condition become improved, their leave had been granted, and so on and so forth. So he was actually, his idea diverted from socialism to, right, Fabian socialism, right? He was a strong supporter of Fabian socialism, matlab socialism. Marxism was in favor of state socialism, state command करेगी. Fabian socialism क्या कहता है कि लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलिज्म बहुत जरूरी है, इक्वालिटी जरूरी है, बट लिबर्टी बहुत जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, ठीक है, वो इसकी बात करता है, right? And if you look at, he became very much critical to Brahminism. Brahminism does not mean that Brahmins who are wise and prudent and very advanced in the every field. He was against the Brahminism, as the person who believe in inequality, right? Who believes that others are inferior to me, right? And this ism exists in all social classes. Am I making sense? Brahmanism is not something which exists only in Brahmin. Brahmin is a something, idea, some psychology, right? Who believes in superiority and inferiority, right? Who believes in that someone is either higher position or someone is or lower position. जब भी ये बात हायरार्की की बात होगी तो आपसे ऊपर भी होगा कोई और आपसे नीचे भी होगा कोई. Now that is Brahmanism basically, right? And Brahmanism and Brahmins are not both equal. However, if you look at the ancient Brahminical text justified Brahmanism, and it was originator of Brahmanism, because if you look at Chaturvarna Dharma, right? The dharma which divided society into 4 Chaturvarna, जो लास्ट में बात हो रही थी, है ना? Right? Now this is, the reason for this Chaturvarna Dharma is reason for graded inequality, right? Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Sudra, the Avarna. Okay? So in later phase of Ambedkar's life, Ambedkar became critical to capitalism. Ambedkar becomes critical to Brahmanism, and Ambedkar also rejected Marxism. Let me tell you, right? Ambedkar also rejected Marxism. Why? Because Marxism negates liberty. Marxism negates rights, fundamental rights. Ambedkar was in support of fundamental rights. Ambedkar was in support of liberty. Okay? And he also supported socio-economic equality. ठीक है, तो मार्क्स से आपने कंपेयर किया, ठीक है, but he rejected Marxism in the later phase of
his life. He was very much critical to Marxism, right? अंबेडकर को कंपेयर करना है तो ग्रामसी एक थिंकर था, ग्रामसी, एंटोनियो ग्रामसी। कंपैरिजन ग्रामसी से सही होगा अंबेडकर को करना, राइट? ठीक है, क्योंकि ग्रामसी जो था वो ग्रामसी वाज रिजेक्टिंग हेजेमनी और डोमिनेंस. His interpretation was cultural, right? Ambedkar idea was also interpretation of power, dominance was also cultural point of perspective, right? Gramsci was speaking in favor of the lowest strata of the people. Ambedkar was also focusing on the lowest strata of the people. कौन? Gramsci and Ambedkar. अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया मैंने, अभी तो ऐसी बात कर रहा हूं जैसे यू डिस्कस एंड मैंने शुरू कर दिया, राइट? आपको अपने अंबेडकर का एक बड़ा सा फेमस स्लोगन है, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट. एडुकेट सुना है ना? एडुकेट, हाँ, एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, एजिटेट. ऑर्गेनाइज, एजिटेट, सुना है ना? Now it was a formula of Gramsci actually. Ambedkar borrowed it from Gramsci. Organize and agitate. Agitate किसके खिलाफ? Injustice के खिलाफ. Right? Education is very important for Ambedkar. Education is very empowerment tool for Ambedkar. Organize means you must organize on a common platform. Right? Without solidarity, without unity, we cannot fight against your enemy. Right? So you must, form organization, different organization. If you are a student, you form different classes as student organization. If you are a farmers, you do that. If you are an employer, if you are a teacher, so you have to organize. Right? You have to be united and you have to show solidarity. Right? When you fight against injustice. Agitate means protest against all kinds of injustice, inequality. Right? Now, he borrowed this slogan from Gramsci. It was a Gramsci who used to speak on this. Not the three word, his line was bigger. Right? He was also, both were fighting both were speaking from the below. Speaking from दोनों नीचे से बोल रहे थे, राइट? और दोनों का इंटरप्रिटेशन क्या था? कल्चरल था. इनका भी कल्चरल था, इनका भी कल्चरल था, राइट? दोनों का एम्बिशन था जस्टिस हो, इनका भी एम्बिशन था जस्टिस हो. तो ग्रामसी से अंबेडकर को इक्वलाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? ही वाज इन लेटर पीरियड ऑफ लाइफ, ही वाज वेरी क्रिटिकल टू मार्क्सिज्म. विल डिस्कस अभी तो. अंबेडकर वाज क्रिटिकल टू मार्क्सिज्म. Gramsci reinterpreted Marxism, right? And he interpreted it in such a way that, later on he, provoked the scholars to interpret culture in such a way that now the contemporary orthodox Marxists never understood or reject them as a Marxism. ठीक है, उन्होंने मार्क्सिज्म को इस तरह से मरोड़ दिया. उसके बाद और लोगों ने इनके वे को थोड़ा सा यूज करके मार्क्सिज्म को ऐसे इंटरप्रिटेशन किया कि जो मार्क्स के फॉलोअर थे, क्लास पर्सपेक्टिव में जो देखते हैं, उन्होंने बोला कि ये तो मार्क्सिस्ट ही नहीं है, राइट? एनीवे, अच्छा,
तो थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताया जाए। अभी तो आपने सवाल जो पूछा था उसी का मैंने थोड़ा सा, लेट मी टॉक अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर। I'll escape his personal life, right? About his father, right? About his village, right? About his birth. Basic information here that you should look at. Basically, I'll talk about his socio-economic and political philosophy. कौन सा? His social philosophy, और एक ही वर्ड में कहते हैं अम्बेडकर सोशियो economic and political thought and political thought we will discuss today, right? Right now, if you look at the entire goal of Dr. Ambedkar, if you look at the goal, what was goal of Ambedkar? The goal of Ambedkar was to establish an egalitarian society based on liberty, equality, and fraternity, right? To establish an egalitarian society based on liberty, equality, and fraternity. That was his goal. Entire goal was this. And for this goal, for this objective, he had to fight against injustice. Right? Now, if you look at Dr. Ambedkar, he was a representative of depressed classes. Of all unheard voice. Disadvantaged groups, you can say that, not classes, groups. We should not misunderstand Dr. Ambedkar was a mere only representative of depressed classes. He was also representative of women. No, he was talking he talked about women rights. He talked about women rights. So we should not take, so here was representative of all voices of disadvantaged groups. What he talked about, he framed Hindu code bill. Have you heard about Hindu code bill? He was the man who framed Hindu code bill, which talked about equality between man and woman in all Hindu community. Right? Yeah. He actually praised his voice. He praised Jawaharlal Nehru to pass Hindu code bill, but Jawaharlal Nehru did not do that in 1951, and he resigned. And then this Hindu code bill was broke down into several pieces, right? And then it was passed finally in 1956 as a Hindu marriage law, which prohibited polygamy, right? Hindu Succession Act, which had given equal property right to women. Okay? So that's is a connection. समझ में आया? Right? ठीक है?
So he was a representative of all voices of disadvantaged groups. Okay. Now, if you see that, he wrote on several issues, and we have already discussed his, the organization he's led down. The many organization, if you look at, he led organization, he led conferences, he led newspapers, he wrote several newspapers. He also actually, led so many movements like Mahad Satyagraha, Kalaram Temple Entry movement, right, for the social change, and he led also political party for, for political representation of the depressed classes, right? That was his action. But look at his thought. What kind of socialism? For example, Ambedkar's idea on socialism. Ambedkar idea on socialism. What was Ambedkar thought on socialism? Now let me tell you, initially in 1930s and 1940s, right, if you look at 1930s and 1940s, he was influenced by state socialism of the USSR, right? If you look at the state socialism of USSR impressed Ambedkar. Why is it so? Because this state socialism of USSR provided equality. That was the choice of Ambedkar, right? This USSR actually socialism provided equality between man and woman. That was Ambedkar wishes, right? So he was actually he was in favor of state nationalization of land, right? He was in favor of nationalization of land. This is a socialist idea. He was in favor of nationalization of land, right? And he actually talked about the state should hold key industries, right? The states command over key industries. Now in socialist country, state commands industry. कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता. अमेरिका कुछ ऐसा नहीं करता है कि इंडस्ट्री को कमांड करे. अमेरिका में कोई स्टेट कोई इंडस्ट्री नहीं चलाती. कहां चलाता था? यूएसएसआर में. Got the idea? He was in favor of insurance policy for each person, and that was taken by the state, right? He was in favor of insurance policy that is favored by the state, led by the state. A state led insurance of each person. Each individual. Still people don't, value the insurance. Now it has been totally marketized. Insurance कर लीजिए, पैसा ले लेगा आपसे. जब उसकी बारी आएगी तो फिर आपको दुनिया दिखाएगा. हाँ, अरे बोले आपका टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ा आपने, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है. मैं खुद भोगी हूँ बहुत सारे ऐसे लंबार्ड का स्टेट. जब जरूरत हुआ उन्होंने बोला कि ठीक है आप करवा लीजिए. हमने करवा लिया, और उन्होंने 1 महीने ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमारी डॉक्टर की टीम है वो बैठेगी, ऐसे वैसे. बाद में बोला कि आप क्वालिफाई नहीं करते, रिम्बर्स नहीं किया जाएगा. गॉट द आइडिया? देन अब तो आज का इंश्योरेंस क्या है? आज का जो मार्केट इंश्योरेंस है,
most of the or market the market-led insurance today, it is only business collection of money. आप लेने वक्त ले लेगा, हाँ सर जी सर, 5 बार आपके घर पहुंच जाएगा इंश्योरेंस कराने, नहीं है ना, 5 बार फोन कर देगा, सर कब करेंगे, सब अब कर लीजिए सर, 10% का छूट है, हाँ, और जब आपको जरूरत होगी तो बड़ा ही ठेंगा दिखाता है, हाथ खड़े कर देते. Anyway, now he was in favor of state-owned economy, and he said agriculture should be the state-owned economy. What he said? Agriculture should be a state-owned economy. Agriculture should be the state-owned economy. For him, a state should be responsible to manage and plan the economic life of the people. For him, for Ambedkar, a state should make plan of economic life of its people. Economic life of its own people. Right? The state should focus on redistribution of wealth. Now, this is something socialist concept. Redistribution karna hai. Right? Now, what he talked about, the state should redistribute the national wealth. Wealth and income. And that was a prime concern for Ambedkar. जैसे एक तो है नेशनलाइजेशन कर दीजिए लैंड का, नेशनलाइज कर देंगे तो क्या होगा, इट विल बी रन बाय द स्टेट अपॉइंटेड ऑफिशियल. Everyone can come and work as industry in that industry. One can get salary. This is one way. Second is land reform. Right? Second is land reform. जो big लैंड ऑनर हैं, नेशनलाइजेशन होगा वो तो ना, ये लैंड को अलग अलग भागों में बांट दीजिए, लोगों में नहीं, आप बांट दीजिए फिर पहले. राइट? एंड try to, if you give ownership to to the landless who are already deprived of the land, right? And limit the ownership of the land of who have very big chunk of land. So national land reform is also one way of redistribution or distribution of wealth. समझ में आया? ठीक है? So he was in favor of redistribution of wealth and income. Got the idea? So if you look at the state socialism, for him socialism was this. But if you look at, he rejected the Marxism in the later phase of life. Right? आप देखेंगे कि यूएसएसआर में काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है. 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन होती है. राइट? इकोनॉमिक डिप्रेशन. एक ही कंट्री है जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता. देयर इज ओनली वन कंट्री which remained unaffected by the economic depression, the great economic depression of 1929-30, that was Russia, USSR. Right? And therefore he was very impressed by the progress of USSR. Right? ठीक है? So, समझ में आया? Right? So that was the idea of socialism, the key ideas of the socialism. Now in the later phase of in later phase he rejected Marxism
and state socialism. समझ में आया? Now, along with socialism, he was champion of liberty. अगर आप बात करते हैं, along with socialism, you know, Dr. Ambedkar was champion of liberty. He was a champion of liberty. He thought liberty, equality, fraternity, and rights. Got the idea? समझ में आ रहा है? Now, if you look at, मैं आपको दो फेज की बात बताता हूँ, 1930s and 1940s. Ambedkar was against capitalism and against Brahmanism. Here, Ambedkar, you know, supported state socialism. Ambedkar supported state socialism in 1930s, 1940s. And what is state socialism that we had talked about? The entire feature. He favored state socialism because it was, you know, providing equality, it was providing justice, right? Now, if you look at 1940s and 1950s, यहाँ पर Ambedkar was against capitalism. Ambedkar was against capitalism and Brahmanism. Right? Ambedkar was against capitalism and Brahmanism. And he thought both capitalism and Brahmanism are exploitative. दोनों exploit करता है. Right? Both are, क्या है दोनों? Exploitative है. Both are exploitative. Inequality exists in both you know, set of ideas. Right? Now, in 1940s, 50s, Ambedkar rejected Marxism. Ambedkar rejected Marxism. Right? Right? Due to two major reasons. Two major regions. Now, first, the social region. Second is philosophical region. First is पहले philosophical region, social region कह लेते हैं. Social cause. Now, if you look at even within workers were practicing Brahmanism. They were equal. All were workers, but even then they were not equal. The scheduled caste had to fight for their own cause. They had to fight, you know, they had to set up their own organization. Brahmins were not concerned about the workers belonging to the depressed classes. Right? They were not eating on the same, you know, roof. Brahmin were eating somewhere, and workers, the scheduled caste were eating at the other places. Right? So he thought even, you know, economic equality is not bringing equality, social equality. समझ में आ रहा है? Right? So समझ में आ रहा है? Right? So he witnessed workers Association of Mumbai, associations of Mumbai or Bombay
where workers, comma, equal in status, equal in economic status, practicing workers, where workers equal in economic status were practicing social, untouchability. Untouchability. Right? The workers from the depressed class had to fight for themselves. The Brahmin was used not to mobilize for their cause. Brahmin अलग हो जाते थे. जब ब्राह्मण का कॉज है तो सारा वर्कर का कॉज है, सबको बुला लेते थे. जब वर्कर क्लास जो सॉरी इंडिया में सब कुछ पता चल जाता है, पता चल जाता है, बहुत तरीके हैं पता करने के. अब तो लोग नाम के पीछे आगे पीछे इधर उधर बदल लेते हैं, उसके बावजूद भी पता लग जाता है. देयर आर डिफरेंट रीजन. 4 दिन रहेंगे आपके साथ, उसको सब कुछ पता चल जाएगा. वर्कर्स एक साथ में रहते हैं तो पता चल जाता है. जो लोग वर्कर्स क्या, कोई भी एक साथ में 2 4 5 दिन रहेंगे साथ में तो उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा आपको क्या हाल है नहीं है. एंड इन इंडिया इफ यू सी, अब तो बहुत वो जो है इराडिकेट हो गया है, अब इवेपोरेट हो गया है, अब चीजें उतनी रिजिडिटी रही नहीं. इंडिया वाज अ वेरी रिजिड सोसाइटी, very rigid society. Even friendship was based on the caste. Even look at the village. Upper caste का जो maximum friend है वो upper caste ही है. लोअर कास्ट के नंबर कम होंगे, संख्या कम होगा, और ये संख्या बढ़ा है बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन. लोग स्कूल में मित्र मिल जाते हैं, इधर मिल जाते हैं, मार्केट में मिल गए, राइट. बट सोशली दे आर एक्चुअली इंटेंगल्ड. कभी भी कुछ फंक्शन होगा, मैरिज होगा, लोअर कास्ट के फ्रेंड्स को अवॉइड करना चाहेंगे और अवॉइड करते हैं, राइट. Right? This is a practice. This is a real practice in India, Indian society. Right? So if you see, this was the social cause. समझ में आया? That's why he rejected Marxism. समझ में आ रहा है? Right? 2-4 लाइन और भी लिखना हो तो लिख लीजिएगा. Right? कि scheduled caste, workers had to fight their own cause. Right? Now the second cause was philosophical. If you look at philosophical region, philosophical causes. Philosophical causes. Marxism rejects liberty and gives priority to equality. Right? Marxism rejects rights. Now, for Gandhi, for Ambedkar, liberty and rights both were very important. Constitution for Ambedkar, constitution was very important, right? So that was actually philosophical issues, right? Marxism rejects liberty and rights. Marxism rejects liberty and rights, whereas Dr. Ambedkar had given priority to liberty and rights. And rights within the Constitution of India, right? Within the constitutional limits. Within the constitutional limits.
right? For Ambedkar, liberty was very essential part of life. For Ambedkar, liberty, freedom is very important part of life, right? Whether it is a social freedom, whether it is a political freedom, whether it is a economic freedom, right? So that was actually region. Now look at Ambedkar idea on democracy, right? थोड़ा देख लेते हैं अंबेडकर आइडिया डेमोक्रेसी का क्या आइडिया था. इतना क्लियर है ना? आई होप इट्स क्लियर, राइट? सोशलिज्म के ऊपर क्या है नहीं है, राइट? ही वॉज इन फेवर ऑफ फैबियन सोशलिज्म. किसके फेवर में थे? ही वॉज इन फेवर ऑफ फैबियन सोशलिज्म, राइट? और फैबियन सोशलिज्म क्या है? फैबियन सोशलिज्म इज लिबर्टी प्लस socio-economic rights. Socio-economic, this is actually Fabian socialism. कि लिबर्टी कर्टेल नहीं होगा, बट रशिया कर्टेल कर रहा था लिबर्टी. स्टालिन वाज वेरी ब्रूटल, राइट? बट आप देखेंगे कि फैबियन सोशलिस्ट बिलीव दैट liberty is also very important part of individual life. You cannot crush someone's right, someone's liberty. ठीक है? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है कि जो भी सोशियो इकोनॉमिक राइट्स का मतलब है कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी, इक्वल डिग्निटी. समझ में आ रहा है ये? राइट? सोशियो इकोनॉमिक राइट्स में क्या आ जाएगा? राइट टू यूएसएसआर में ऐसा कुछ नहीं था. हाँ, ठीक है, वहां पर ये बात नहीं की गई. ठीक है? तो ही वॉज फेवर ऑफ राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ही वॉज इन फेवर ऑफ राइट टू इंश्योरेंस और राइट टू हेल्थ, एडुकेशन, है ना, सैनिटेशन, इंश्योरेंस, राइट? सोशल में क्या आ जाएगा? राइट टू इक्वल डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी इन डिग्निटी एंड स्टेटस. राइट टू इक्वालिटी इन डिग्निटी एंड स्टेटस. ये अलग है, ये वाला लाइन है. इंश्योरेंस, ठीक है? राइट टू इक्वालिटी इन डिग्निटी एंड स्टेटस. अब देखेंगे कि हमारा जो पूरा डीपीएसपी है, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये है डीपीएसपी, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बातें की गई है. Right to equality between man and woman in terms of equal payment for equal work. Free legal aid, है ना? फ्री लीगल एड. नाउ ये पूरा लिबर्टी, फंडामेंटल राइट क्या है? लिबर्टी है टोटल, राइट? एंड दैट बोथ कॉन्स्टिट्यूट्स सोशल जस्टिस. So let's talk 2 minutes on Ambedkar's idea of social justice. अंबेडकर्स आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस. आप देखो, जस्टिस जो है कॉन्सेप्ट ना, जस्टिस में दो अप्रोच है. एक है लिबरल का अप्रोच, दूसरा है मार्क्सिस्ट का अप्रोच, राइट? लिबरल
अगर लिबरल से पूछोगे कि जस्ट सोसाइटी कैसे मिलेगा, तो लिबरल्स से पूछो कि जस्टिस कैसे होगा, तो ये बोलेगा कि अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी, देन रूल ऑफ लॉ, राइट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो इस आधार पे एक जस्ट सोसाइटी बन सकती है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन से मतलब हो गया इक्वालिटी, समझ गए कि किसी को किसी का भेदभाव नहीं होगा, इक्वालिटी रहेगी, right? Liberals believes a society where equal opportunity prevails, where and rule which work on the basis of rule of law, right? That state is a just society or just. अगर उनके बात करोगे कि कैसे जस्टिस मिलेगा, तो बोलेगा जस्टिस ऐसे मिलेगा, समझ में आ रहा है, जहां पर फ्रीडम भी होना चाहिए। लिबरल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, राइट। एक बात कह सकते और लिबर्टी ऐड कर दीजिए, लिबर्टी ऐड कर दीजिए। लिबरल्स कहता है कि जहां जहां पर ये सब होगी, लिबर्टी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रूल ऑफ लॉ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, दैट सोसाइटी वुड बी अ जस्ट सोसाइटी, राइट, ठीक है। अब ये क्या कहता है सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट? मार्क्सिस्ट कहता है कि ये सब बकवास है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी कब इक्वल अपॉर्चुनिटी? अगर मान लो कि मान लो कि someone is naturally handicapped and someone is naturally fit, right? क्या आप दोनों को दौड़ा सकते हैं मैराथन में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे करके? नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। अब मान लीजिए कि आपके पास जो भी अमाउंट ऑफ पैसा है और अडानी का बच्चे को आपके साथ खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि दोनों लोग यू आर फ्री टू मूव। अब वो उसके पास पैसा है, वो लंदन चला जाएगा, यू कैन गो। कैन यू call yourself as a free, as equal to as the Adani son? Not, cannot. So Marxist does not believe on the equal opportunity and liberty and principle of non-discrimination, this kind of equality, right? They believe on equality of social equality, social and economic equality. Right? They believe on social and economic equality. Right? For them, a society which is based on social and economic equality would be a just society. जस्ट सोसाइटी कौन सा होगा? वो ऐसा सोसाइटी जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी वहां पर हो। पैसे मतलब अगर बराबर सैलरी ना मिलता हो, किसी को 10,000 तो किसी को 15,000, फिर भी ठीक है, बट ऐसा नहीं कि किसी को 5 करोड़ और किसी का 10,000। समझ में आ रहा है? तो दे बिलीव ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एज द बेसिस ऑफ जस्ट सोसाइटी, right? And they are very critical to the liberal society which talks about freedom which leads to exploitation. समझ में आ गया? Now come to Ambedkar, right? Come to Ambedkar. Now Ambedkar has taken from something from here and something from here. Ambedkar has taken something from here and something from here. He had taken liberty from here and he had taken from socio-economic equality or socio-economic rights. Socio-economic rights, equality की बात नहीं हो रही, rights की बात हो रही है, right? On right,
for the just society, right? Liberty, equality, and fraternity, right? Constitutional government, right, would be a just society. For Ambedkar, if you look at social justice means liberty, equality, and fraternity. He rejected, Brahmin patriarchy. He rejected the caste system, right? He rejected capitalism, right? So if you look at the Ambedkar's idea of social justice was influenced by this idea. समझ में आया? एक छोटा सा पीस में इसके लिए दूंगा आपको, जो दिया है उसमें थोड़ा कम है, तो आज मैं थोड़ा सा ऐड किया हेल्प करके. Fine. So if you look at Ambedkar was against the inequality existed in Indian society. He was against exploitation. He was against, the atrocities that was done on depressed classes, right? And, he was against the concentration of knowledge, because knowledge was concentrated in the few community during the, pre-independent India, right? He was, if you look at his slogan, agitate, organize, and educate, organize, and agitate. That was slogan of Dr. Ambedkar. समझ में आया? सो ये आइडिया है उनके सोशल जस्टिस का. ठीक. Now come to his idea on democracy. On democracy, let me tell you, Dr. Ambedkar was in favor of social democracy. He was in favor of social democracy. बोलोगे सर सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सोशल देखो होता क्या कि डेमोक्रेसी में क्या होता है जनरली, डेमोक्रेसी ओनली टॉक अबाउट political equality, right? Democracy talked about equality. Equality means one person, one vote, and one value. That is liberal democracy. That is liberal democracy. Liberal democracy believes on political equality. Non-discrimination, right? Political equality क्या मतलब है? One person, one vote, and one value. Now, apart from this, liberal democracy talked about individual rights, individual property rights. That's very important in liberal democracy. Property rights of individual is very much secured. उसको कोई टच नहीं करेगा, स्टेट भी नहीं मांगेगा उससे. समझ में आ रहा है? नाउ ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि किसको ज्यादा फोकस किया जाता है? लिबर्टी ओवर, और यू कैन सी द प्रायोरिटी ऑफ लिबर्टी, priority of liberty, free market, rights over equality. ये लिबरल डेमोक्रेसी है वेस्ट में. नाउ अगर सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे, इट फोकस नॉट ओनली दिस, it focus a little more, right? Social democracy believes in political equality. One person,
one vote and one value. But it also believes on economic equality, right? Social equality, right? It believes in, here you can see that political equality, right? That is one person, one vote, person, one vote, and one value. Ambedkar focused on socio-economic rights. Socio-economic rights. Right? And he said that a state must reduce socio-economic inequality. स्टेट को कम करना पड़ेगा, ये मार्केट नहीं करेगी, ये स्टेट करेगी. लिबरल कहेगा हमेशा ये मार्केट कर देगी. जब ये सोशल डेमोक्रेसी ये नहीं कहता, ये कहता है कि स्टेट कम करेगी ये इनइक्वालिटी, राइट? स्टेट will decrease inequality, or state will fill the gap between rich and poor. ये काम कौन करेगा? स्टेट करेगा. कौन करेगा? स्टेट करेगा. और अंबेडकर कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी विल रिकॉग्नाइज लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. सोशल डेमोक्रेसी shall be based on the value of liberty, equality and fraternity. That was a cardinal principle. He said this is a trinity in unity, right? तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है उतना ही जितना इक्वालिटी है, इक्वालिटी भी इतना इंपॉर्टेंट है जितना फ्रैटर्निटी है. बट उन्होंने कहा कि फ्रैटर्निटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन इक्वालिटी एंड लिबर्टी. अगर कोई बोले कि तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो फ्रैटर्निटी. बिकॉज जब तक फ्रैटर्निटी नहीं होगी तो लिबर्टी नहीं होगा. आप मेरे में भाईचारा नहीं होगा, घृणा होगी, तो आप बोले चल भग जाए यहां से. ये शब्द हिंदी में आप मीत नहीं समझते हैं कि मीत हो गया. मीत मतलब होता है कम. अच्छा, ये मीत सुना है? मीत दोस्त, फेलोनेस, कॉमरेडशिप. हमारे और आप में ये उदारवादी नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है. फ्रैटर्निटी मीन्स भातृता, हिंदी में बोलते हैं भाईचारा. बट भाईचारा एक बड़ा ही मैस्कुलिन वर्ड है, इसलिए मैं यूज नहीं करता, राइट? मीत कोई वुमन भी हो सकती है. ब्रदरहुड इज अ मैस्कुलिन कॉन्सेप्ट, राइट? फेलोनेस, राइट? Should understand you are a fellow man of my country, and she is a fellow man of my country, right? And anyone is my fellow man. मीत मतलब बराबर के, राइट? और जब तक बराबर नहीं समझेंगे, ये भातृता, ये भावना नहीं आएगी, आप दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे, राइट? So he thought the fraternity is most important, then liberty is important, then equality is important, राइट? ठीक है. इक्वालिटी देकर के क्या करेंगे? लेट मी टेल यू. इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी में अंतर है. हो सकता है, मैं वर्कर्स की बात कर रहा था, मुंबई में वर्कर्स का. जो वर्कर्स थे वो तो इक्वल थे इन टर्म्स ऑफ रेन्यूमरेशन,
इनके बीच में तो इकोनॉमिक इक्वालिटी थी, फ्रैटर्निटी नहीं था, और इसीलिए साथ में खाते नहीं थे। और जब मान लो कि कुछ प्रॉब्लम होती थी शेड्यूल कास्ट वर्कर्स को, तो उस वक्त नहीं जाते थे अपर कास्ट के लोग, उनके धरना में, उनके प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो इक्वालिटी तो थी, फ्रैटर्निटी नहीं था। आजकल भी हम तो इक्वालिटी मानते हैं, बट आज भी फ्रैटर्निटी की कमी है, राइट। आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री जो है, अगर फूड ऐसी इंडस्ट्री है जब अगर दलित चलाएगा तो नहीं चलेगा, कह नहीं सकते, ऐसा ही है। फूड इंडस्ट्री आप देखिएगा, राइट, इट इज रन बाय नॉट Dalit. All industries, more or less have been acquired by Dalit. Dalit entrepreneurship have become so strong. It's very little strong, not so strong, little strong comparatively. But if you look at in food sector, if people know the caste name, people won't go. And it operates in the smaller town very, very sharply. ठीक है। जो स्मॉलर टाउन है वहां पे बहुत अच्छे से काम करता है, बिगर टाउन में पता नहीं चलता है कौन क्या कास्ट क्या, ठीक है। बिगर टाउन में इतना लोग वैल्यू भी नहीं करते, बट स्मॉलर टाउन में यस दे वैल्यू। एनीवे, व्हाट द आइडिया? नाउ लेट मी टेल यू, he talked about idea of social democracy in the Constituent Assembly, right? And let me read what he said. मैं पढ़ता हूं वो क्या कहते हैं, right? He said, on 26 January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have equality, right? In social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one value. In the socio-economic life, by the region of our social and economic structure, continue to deny one person, one value. How long shall we continue to live in this way of contradiction? ये कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमने अचीव कर लिया by granting universal adult franchise, but if you look at economic structure, right, social structure of Indian society, there is no equality, there is a denial of equality, right? If you look at social equality, political sense में तो हम आ गए. Now look at social equality, social, right? सोशल में कैसा है हमारा समाज? हमारा समाज तो ऐसा है ना, हमारा तो समाज ऐसा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र एंड अवर्ण. इकोनॉमिक में कैसा है? इकोनॉमिक में ब्राह्मण पहले थे, बाद में क्या हो गया? वैश्य, राइट? किसी को क्षत्रिय डाल दिए ब्राह्मण, देन शूद्र, और इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डेटा, बट मैंने ऐसे डाल दिया है, right? I thought Kshatriya is much more powerful economically than Brahmin in Indian nation, in India, right? तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहाँ है? अवर्ण यहां पर भी नीचे, ठीक है. अब तो यहां से भी कुछ लोग ऊपर भाग गए हैं यहां पर इकोनॉमिक फील्ड में, हाँ, जैसे जाट एंड गुज्जर्स, जिसको डोमिनेंट कास्ट कहते हैं. जाट एंड गुज्जर्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राइट? द Vocaligas in Karnataka, right? Kamma and Reddy in Andhra Pradesh, Yadav Singh, Madhya Pradesh, Madhya Pradesh, उत्तर प्रदेश एंड बिहार. इनके पास लैंड आने से ये इनकी इकोनॉमिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है, और पॉलिटिकल स्थिति भी काफी अच्छी हो गई. देखिए मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यादव से है ना, ठीक है. और बिहार के चीफ मिनिस्टर 1990 से लोअर कास्ट रहे हैं, राइट? इसी कम्युनिटी से रहे, जो पहले ये कहलाते थे, आज ओबीसी कहलाते हैं, राइट? अब देखिए कि उत्तर प्रदेश 1990 से ही ऐसा रहा है, अभी कुछ 2017 से ये हैं. वो यहां से ओबीसी कहलाते, राइट? एनीवे, तो यहां पर तो हम पॉलिटिकल इक्वालिटी अब कर लिया, हमने सबको बराबर कर दिया. यहां पर क्या कर दिया हमने?
हमारा जो यहाँ पर है, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या है, शूद्र एंड अवर्ण, सबको बराबर कर दिया। यहाँ पर हमारा घर ऐसा है और इस क्षेत्र में हमारा घर इस तरह का है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दोनों अलग अलग है, इनको भी मोड़ के ऐसे लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसको भी मोड़ के ऐसे लाना पड़ेगा, राइट? हमें वी नीड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल इक्वालिटी so that the democracy can survive in India, right? The democracy can be the healthy democracy in India, right? We should solve this contradiction as soon as possible, right? If we are not solving this contradiction, basically this inequality blow up the structure of democracy. जो डेमोक्रेसी है वो खत्म कर दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा भारत में। नाम के लिए कुछ रहेगा बट डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। समझ में आया? डेमोक्रेसी इज एटीट्यूड ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी मीन्स ट्रीटिंग इक्वल, गिविंग अदर्स एज इक्वल वैल्यू, डिग्निटी। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अंबेडकर। समझ में आया? तो ये आइडिया है उनके सोशल आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी इज नॉट समथिंग लाइक पॉलिटिकल मशीन, कि जैसा है भाई पॉलिटिकल मशीनरी है किसी तरह चला लो, नहीं, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी की वैल्यू है। समझ में आया ये सब चीज कि कैसे वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ये जो है, ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर है, वो बड़ा ही अनइक्वल है, राइट? ये इक्वल आपने बना दिया, सबको एक एक वोट दे दिया। हाँ, ये दोनों ये कॉन्ट्राडिक्शन है। And he is asking question कि how long we will deny, right? How long we will to live with this contradiction, right? How long we will live with this contradiction? समझ में आया? सो ये आइडिया है इनका सोशल डेमोक्रेसी का, राइट? सो अंबेडकर इतना ही, ठीक है। सो आज अंबेडकर। नाउ हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग वी वर टॉकिंग अबाउट दलित पर्सपेक्टिव। नाउ वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द दलित अप्रोच, और डिप्रेस्ड क्लास अप्रोच वाज डिफरेंट। बता दिया ना? डिप्रेस्ड क्लास अप्रोच क्या था? जो डिप्रेस्ड क्लास अप्रोच था क्या था फ्रीडम स्ट्रगल में? दो चीज, दे वर क्रिटिकल टू आईएनसी, critical to Indian National Congress and their version of nationalism. एक तो ये अप्रोच था, ठीक है। Secondly, they were negotiating with British in order to get more and more rights, more and more representation, right, and equality. Negotiation with British authority. For rights, liberty, equality, and representation. Right? And this negotiation, if you look at, Ambedkar played a very, very important role. For this negotiation with British authority for rights, liberty, equality, and representation, if you see, the role of Ambedkar was very prominent. लिख लीजिए।
समझ में आया? And if you look at this negotiation with the second, they were critical to INC and their version of nationalism. And they were in support of, they were negotiating with the British authority for rights, liberty, equality, and representation. Right? And they were also negotiating with INC. It's not that they were only negotiating with British, they were also negotiating with the Indian National Congress. Because Indian National Congress was putting pressure on the depressed classes organizations, right? And the classical example is, the Pune Pact, the negotiation between Gandhi and Ambedkar, right? So they were also negotiating with the dominant organization. Negotiation with dominant organization. Like INC for rights and representation. Right? Now, like for example, Pune Pact. Pune Pact. Right? Now, if you look at the Constituent Assembly, Ambedkar was the major voice on the behalf of the depressed classes. Now, if you look at, due to his negotiation, right, we have Article 17 in the Indian Constitution, isn't it? And we have Article, 15 Clause 4, isn't it? Article 15 Clause 4, which talks about a state shall give a special provision for the SC and ST. Right? Now, due to his negotiation, we have Article 330, 331, 332, 333, which talks about representation of SCs and STs in a state assembly and the parliament. Right? So that was a new negotiation of the Ambedkar's approach towards the India's nationalism. मान लो ये अप्रोच नहीं होता तो क्या होता? नहीं मिल पाता भाई, बहुत आसान नहीं है ये सब लेना. It was easy, मान लो कि they negotiated with British and then they got, separate electorate. पता है ना? सेपरेट इलेक्टोरेट, ये नेगोशिएशन किया ब्रिटिश के साथ, तब उनको मिला सेपरेट इलेक्टोरेट. Ambedkar was the lone leader who attended all round table conferences, all 3 round table conferences. ठीक है? वो हर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो प्रेजेंट रहते थे. He did not support Quit India movement. He supported Britishers. Right? उनको लगा कि अगर हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को, राइट, तो ब्रिटिश हमें इन एक्सचेंज में कुछ राइट्स मिलेगा. राइट? उनके लिए युद्ध नहीं, उनके लिए ब्रिटिश इंपॉर्टेंट था. उनके लिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट नहीं था, उनके लिए कम्युनिटी इंपॉर्टेंट थी. समझ में आया? ठीक है? समझ में आया अप्रोच? राइट? फाइन. समझ में आ गया तो अब हम क्या करें? अंबेडकर पक्का ना? अंबेडकर पता चल गया ना? सो आज यहीं तक रहने देते हैं. गांधी कर दिया था हमने सारा. दिस सैटरडे यू विल हैव टेस्ट. ठीक है? हाँ, कल आप आके यहाँ बैठ के टेस्ट दे सकते. टेस्ट पेपर यहाँ मिल जाएगा. ठीक है? कल का टाइमिंग आपको जो ग्रुप पे मैसेज आता है उसी में चला जाएगा. या 11 साढ़े 11 बजे चले जाना, आ जाना, पूछ लेना आ जाते वक्त. यू जस्ट आस्क मैनेजमेंट. फाइन.
ठीक है, तो टेस्ट दे दीजिए इंडिया नेशनलिज्म पे। फर्स्ट स्लाइड ओपन करिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट स्लाइड लीजिए ना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आराम से। फर्स्ट स्लाइड ये लीजिए। वही आपसे बात हो रही थी तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बताया, फिर मैंने बताया कि क्या क्या उन्होंने किया। What he did. पोलिटिकल पार्टी लिख दिया था दा, ओके ठीक है। चलिए इन द रो बट क्या पढ़ना है उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। So militant and revolutionary strategy we have done Bijendra strategy, workers what repressed class strategy, right? Now we need to talk about the Indian national movement, perspective of Indian national movement. We have actually traveled through the India's freedom struggle, and we saw India's freedom movement, right? What was the approach, what was the other component in India's national movement? Now look at what we need to study. India's national movement. ये जो है हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, राइट? अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है? एक तो पर्सपेक्टिव है लिबरल का। लिबरल पर्सपेक्टिव से इंडियन नेशनल मूवमेंट का कैरेक्टर क्या था? क्वेश्चन है कि कैरेक्टर क्या था इंडियन नेशनल मूवमेंट के? तो लिबरल कुछ अलग बात कहते हैं। हाँ, अब किसी से कोई पूछे कि अच्छा ये लड़का कैसा है, तो आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस पर्सपेक्टिव से आपको देख रहा है। जो देखने वालों का नजरिया है, वो उसका नजरिया क्या है, ठीक है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को लिबरल अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कि जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो अलग से देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को। फिर आप देखेंगे कि सोशलिस्ट अलग कुछ देखते हैं। सोशलिस्ट वही कौन सा सोशलिस्ट? फैबियन सोशलिस्ट, जो लिबर्टी में बिलीव करते हैं। सोशलिस्ट का वही मतलब है यहाँ पर, राइट? मार्क्सिस्ट मतलब वो स्टेट सोशलिज्म, पूरा डिक्टेटर वाला। मतलब डिक्टेटर तो लेनिन ने बना दिया था, मतलब जो जिसकी मार्क्स बात करते हैं, ठीक ना। उसके बाद एक है रेडिकल ह्यूमैनिस्ट। रेडिकल ह्यूमैनिस्ट पर्सपेक्टिव, इसमें एम एन रॉय आते हैं। ये एम एन रॉय ने दिया था पर्सपेक्टिव, राइट? वो भी मार्क्सिस्ट ही थे, बाद में ह्यूमैनिस्ट बन गए, राइट? और इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सबल्टर्न एक और है जो नया स्कूल है जिसका नाम है
subaltern, right? पर्सपेक्टिव। अब बोलोगे सर सबल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है? ये है ग्रामशियन पर्सपेक्टिव, राइट? ये कल्चरल पर्सपेक्टिव से देखता है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखता है, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, हर साइकोलॉजिकल, हर पर्सपेक्टिव से देखता है, राइट? इकोनॉमिक पे ज्यादा फोकस नहीं करता, ये ज्यादा इकोनॉमी पे फोकस करता है, राइट? इकोनॉमी को बहुत ही वैल्यू देता है मार्क्सिस्ट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। ये लोग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी वैल्यू देता है और फिर उसके बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन में जाता है, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल, राइट? ये सब को देखता है सबल्टर्न पर्सपेक्टिव को, राइट? और ये जो पर्सपेक्टिव, सबल्टर्न मतलब होता है पीपल फ्रॉम बिलो। ये जो सबल्टर्न है ना, पीपल फ्रॉम बिलो। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिक्शा पुलर है, हाउ अ रिक्शा पुलर विल लुक एट द इंडियाज नेशनल मूवमेंट। एक रिक्शा पुलर नेशनल मूवमेंट को किस तरह से देखता था, ये देख रहा होगा, समझ में आया? जो पिजेंट है, जो फार्मर्स है, जो पिजेंट है, जो ट्राइबल है, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरह से, किस वे में देखता होगा, उनके लिए नेशनल मूवमेंट क्या था, ठीक है? समझ में आया? और इसके जो सबल्टर्न पर्सपेक्टिव है, एक्चुअली वर्ड सबल्टर्न हैड बीन टेकन फ्रॉम ग्रामसी, राइट? And in India, New Gramscian had actually talked about this perspective. Ranjit Guha was a founder. Ranjit Guha, right? और उसके बाद बहुत थे, गौतम भद्र, दीपेश चक्रवर्ती, पार्थ चैटर्जी, डेविड हार्डीमैन, राइट, डेविड अर्नोल्ड, ये सब इनके सपोर्टर है। ये लोग मानते हैं कि नहीं, ये ही सही, ये पर्सपेक्टिव बहुत सही है इंडियन नेशनलिज्म को देखने का, इंडियन नेशनलिज्म को जानने का। समझ में आ रहा है? सो अगर आप पूछेंगे कि इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट कैसा था भाई, नहीं होता है ना, अरे भाई मूवी कैसी थी, 10 लोग मूवी देख के आए और आपने पूछा कि मूवी कैसी थी। अब मूवी कैसी थी, ये उस आदमी का पर्सपेक्टिव बताएगा, वो किस पर्सपेक्टिव से उस मूवी को देखा। समझ में आया? उसी तरह यहां पर इंडियन नेशनल मूवमेंट है। The same, in similar manner, there is a Indian national movement. And if you ask someone, what was India's national movement? The liberal historians will give you different view. Liberal historians like R.C. Majumdar, that will give different view. ठीक है? और एक और पर्सपेक्टिव है, एक और पर्सपेक्टिव है दलित पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में अभी थोड़े हम लोग अंबेडकर के बारे में बात कर रहे थे कि अंबेडकर इस देश को किस तरह से देख रहे थे, नेशनल मूवमेंट को किस तरह से देख रहे थे। समझ में आया? तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमें पढ़ने हैं, राइट? आज तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीक वी विल मूव टू दिस पर्सपेक्टिव पार्ट, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स वी विल फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। ये तीनों चारों पर्सपेक्टिव नाम रख लीजिए, नोट कर लीजिए।
राइट? या समझ में आया? सवाल है अभी? समझ में आ रहा है ना? क्लासेस समझ में पक्का आ रहा है? और पढ़ाई कर रहे? आर यू डूइंग स्टडी? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना? उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना समझ में आ रहा है उतना ही, अगर ज्यादा मेहनत करे तो बिल्कुल कोई रास्ता डिफिकल्ट नहीं। सो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं मंडे को। So let me finish here. See you. Huh?